And we also talked about the race condition. Okay. Okay, so I hope the screen is now visible to all of you. So we were discussing the producer-consumer problem in the last lecture, where we talked about the solution to this particular problem. And we saw that by using a integer variable counter, this problem can be solved. We can use all the buffer space, buffer size at a time. But there was a problem if both the processes, producer process and the consumer process, were concurrently accessing this common data which has been shared, the counter variable. So such kind of problem is known as race condition. So we have discussed in detail about what is race condition. So proper synchronization is required between the processes so that it do not affect the overall result of the output, and in the end we will get the exact correct output which is expected. So the race condition is when several processes access and manipulate the same data concurrently, and the outcome of the execution depends on the particular order in which the access takes place. So because of this race condition we might face problem. So we just want to avoid this race condition, and to avoid this the processes must be synchronized in some manner. So today we will discuss about in detail what is a critical section, which is the basis for the process synchronization, and what is a critical section problem. And for critical section problem, there are so many different solutions available, and we will discuss all the solutions one by one in the next few lectures. So first of all, let's try to understand what is a critical section problem, or better to say, first understand what is a critical section. So we are talking about process synchronization, where we have so many processes in a system which are cooperating processes. That means they can affect each other or which can be affected by each other, and they have to execute concurrently. So we have to synchronize them properly to have the correct results or the output. So what critical section problem says, suppose we have a system of n different processes. We have n processes numbered from P0 to Pn minus 1, and critical section is simply a segment of the code which each process has its own segment of code which is known as the critical section. So suppose if we have two different programs, two different C programs. So C program may initially we used to have header file, then we used to have main function, then within the main function we used to have some special lines of code, and suppose in the same second program also we are having the same main function and some code. So critical section is that particular section of the code, that particular segment of the code where the common things are available, and the critical section, the processes may be changing the common variables, updating the tables, writing the files, etc. तो क्रिटिकल सेक्शन एक ऐसा सेगमेंट ऑफ कोड है जिसके अंदर जो भी उन दोनों प्रोग्राम्स या प्रोसेसेस के बीच में कॉमन है, दैट थिंग विल बी पुट. Otherwise, जो उनका अपना independent है, that will not be put into the critical section. So suppose if we have two different programs P1 and P2, and suppose C programs are there. So in the main function, suppose in P1 program we have three different variables ABC which are not related in any manner to another program P2, and similarly P2 is having their own variables XYZ which are not related, but there might be some variables which are common to both the programs. If we talk about the previous example, suppose counter variable is there. So if there is a variable, integer variable count or counter, which is common for both the processes, so such kind of variables will be put into the critical section. So critical section is the region
within the program, within the code that will contain the common variables, and the processes may be changing the common variables. They may be updating the values of the variable, updating the tables, or writing to the files within that particular section. And the most important thing is that when one process is in critical section, no other process is allowed to execute in its critical section. तो भाई अगर एक टाइम पर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया, तब दूसरा प्रोसेस या कोई भी और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं होना चाहिए. दिस इज व्हाट क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज. बिकॉज अगर एक टाइम पर एक से ज्यादा प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाएंगे, वो कॉमनली वेरिएबल्स को अपडेट करना स्टार्ट कर देंगे, देन whatever we have seen in the last lecture, the race condition, the race problem will arise and we will get the incorrect output. So data will become inconsistent. So for data consistency, we have a common region where the program or the variables are updated, but critical section should allow only one process at a time to enter in the critical section, not more than one process. So you can see the next line, no two processes are executing in its critical section at the same time. So this is the critical section problem. तो अगर हम critical section में एक time पर एक ही process को allow करेंगे, then definitely there will be data consistency and we will always get the correct results. And the critical section problem is designed is to design protocol to solve this particular thing. And each process must ask permission to enter critical section in the entry section, may follow the critical section with exit section, then there is a remainder section. So this is the common scenario which you can see for any program, or if any process wants to enter the critical section. So this is the general structure for any process which is represented by, suppose, PI. So first of all, whenever the program will start, there will be some code, some lines, then there will be an entry section. So this entry section is very important. So within this entry section, we will write some kind of code that will allow only one process at a time to enter the critical section. So you can see the hierarchy here. सबसे पहले एक entry section है. जो भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहेगा वो पहले इस एंट्री सेक्शन से होके जाएगा. एंड द कोड वी विल राइट समथिंग लाइक दैट एंट्री सेक्शन अगर एक प्रोसेस को अलाउ कर देता है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, तो फिर अगर कोई नेक्स्ट प्रोसेस आता है क्रिटिकल सेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करता है, देन द कोड विल बी समथिंग लाइक दैट कि वो उस प्रोसेस को नहीं जाने देगा क्रिटिकल सेक्शन में जब तक कि जो पहले इनिशियली प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हुआ है वो एग्जिट नहीं करता. Then here you can see we have initially entry section. Then इसको कंप्लीट करने के बाद जो प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाएगा. क्रिटिकल सेक्शन में जाने के बाद प्रोसेस को जो भी टास्क कंप्लीट करना है, आइदर इट हैज टू update the table, it has to change the values of the common variable, it has to write the file, whatever task that process has to do, the process will do in the critical section. And once the process will complete its entire task, then it will just go to the exit section. So there will be a separate code also for exit section, and once that code will be executed, the process will be exited from this critical section, and remainder section is rest of the portion which is common, which is not common between the processes. So this is how the scenario will work, and we have so many different solutions to this critical section problem. The only difference we will see within the different solution is what code we are writing here exactly in the entry section and what code we are writing here in the exit section. तो आज हम एक फर्स्ट सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, पीटरसन सॉल्यूशन को, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि हाउ दिस कोड विल वर्क. बट यू हैव टू रिमेंबर दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर फॉर एनी प्रोसेस टू सॉल्व द critical section problem. We will be having one entry section, and if any process is able to execute the code which is in the entry section, then it will enter the critical section. It will just do its task within the critical section, because in the critical section at a time only one process can enter.
and after completing its task, it will go to the exit section code. So there will be some code with the help of which the process will exit, and after that there is a remainder section. So once the process will exit this critical section, then any other process will become eligible to enter the critical section. लेकिन जब तक पहले वाला process critical section के अंदर है, वो अपनी चीजें अपडेट कर रहा है, then no other process can enter the critical section. This is just to avoid the race condition and to avoid the data inconsistency. So I hope the problem is very much clear to you. Now, these are three very important protocols or three important rules, or better to say solutions to the critical section problem. So the very first solution or the protocol is mutual exclusion. So mutual exclusion, what it says, if any process PI is executing in its critical section, then no other processes can be executed in their critical section. So this is the simplest thing, which I hope you understand what is mutual exclusion. So this is what the definition of critical section problem says, that no two processes are executing in the critical section at the same time. So mutual exclusion क्या कहता है कि अगर किसी टाइम पर कोई एक प्रोसेस PI क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा है, देन उस टाइम पे जब तक एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, तब तक कोई भी और प्रोसेस, नो अदर प्रोसेसेस कैन बी एग्जीक्यूटिंग इन देयर क्रिटिकल सेक्शन, तब तक कोई भी और प्रोसेस एंटर नहीं कर सकता क्रिटिकल सेक्शन में। एक टाइम पर क्रिटिकल सेक्शन में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, बिकॉज वही इश्यू है, अगर काउंटर वेरिएबल है तो अगर एक प्रोसेस एक टाइम पर उस काउंटर वेरिएबल को अपडेट करेगा तो वो फाइनल उसको मान लो 6 करके जाएगा, देन डेफिनेटली जब नेक्स्ट प्रोसेस विल कम उसको तो फाइनल वैल्यू 6 ही मिलेगी। लेकिन अगर वो कंकरेंटली उसको अपडेट करना शुरू करेंगे, एक प्लस करेगा वैल्यू, एक माइनस करेगा, देन there are chances of the data inconsistency. So this is the very first rule or protocol for the critical section problem, which is known as mutual exclusion. So mutual exclusion simply says, if process PI, अगर कोई भी process PI execute कर रहा है critical section में, so at that particular time, जब तक वो process critical section में है, no other processes can be executing in their critical sections. Next solution or next protocol is the progress. So progress simply means ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सपोज हमारे पास दो प्रोसेसेस है P1 और P2, सो P1 डू नॉट वांट टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन, P1 खुद नहीं जाना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, लेकिन वो P2 को भी ना जाने दे। कुछ ऐसा लॉजिक लगा दे जो हम अभी कोड की बात कर रहे थे, एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन की, तो P1 खुद इंटरेस्टेड नहीं है और वो P2 को भी नहीं जाने दे रहा। सो इससे क्या होगा, प्रोग्रेस रुक जाएगी, नन ऑफ द प्रोसेस will be able to enter the critical section, and अगर कोई भी process critical section में enter नहीं होगा तो definitely the values will not be updated, और जो भी required task होगा वो या तो complete नहीं होगा या फिर delay हो जाएगा। So progress simply means कि हमेशा progress होती रहनी चाहिए, कोई ना कोई process क्रिटिकल सेक्शन में जाता रहना चाहिए, आइदर ऑल्टरनेटिवली, बिकॉज एक टाइम पर एक ही जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं बहुत सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक प्रोसेस अगर खुद नहीं जाना चाहता, किसी भी रीजन से वो इंटरेस्टेड नहीं है टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन, तो वो बाकी सारे प्रोसेसेस को भी ना जाने दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो प्रोग्रेस शुड बी देयर ऑलवेज। सो इफ एनी process itself is not interested, then it must allow other processes to enter the critical section. Last important protocol is the bounded waiting. So bounded waiting means, suppose if we are having two different processes P1 and P2. So सबसे पहले suppose P1 was interested to enter the critical section, P1 ने enter किया critical section में, values update की और उसके बाद exit कर दिया। P2 वेट कर रहा था बाहर कि नेक्स्ट जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन फ्री होगा, अवेलेबल होगा, आई विल एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। बट जैसे ही P1 ने एग्जिट किया, साथ के साथ P1 दोबारा एंटर कर गया क्रिटिकल सेक्शन। दैट कैन बी एनी लॉजिक, अभी हम लॉजिक की बात नहीं कर रहे, जस्ट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। सो P1 अगेन एंटर्स द क्रिटिकल सेक्शन, अगेन P1 अपडेटेड द वैल्यूज एंड कंप्लीटेड द टास्क, P2 इज स्टिल वेटिंग। Then P1 ने जैसे ही एग्जिट किया, P2 was waiting, but again P1 somehow managed to enter the critical section again. So bounded waiting means 2-3 बार ऐसा हुआ, 5 बार ऐसा हुआ, 10 बार ऐसा हुआ, प्रोसेस P1 ही बार बार एग्जिट करते ही अगेन क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा है, P2 की टर्न नहीं आ रही,
तो 10 बार हो गया, 20 बार हो गया, दैट इज ओके, बट ये कब तक नहीं होना चाहिए? इनफाइनाइट टाइम के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए. सो देयर शुड बी अ बाउंडेड वेटिंग. बाउंडेड वेटिंग मीन्स there should be a bound on the wait. A bound must exist on the number of times that the other processes are allowed to enter their critical section, and a process has made a request to enter its critical section and before that the request is granted. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि P2 प्रोसेस को इनफाइनाइट टाइम के लिए वेट करना पड़े, वो कभी भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर ही ना कर पाए. सो दिस इज व्हाट बाउंडेड वेटिंग सेज कि वेट करने की भी एक लिमिट होनी चाहिए. कि सपोज 10 टाइम्स अगर P1 कंटिन्यूसली एंटर कर चुका है क्रिटिकल सेक्शन में, देन नेक्स्ट 10 के बाद डेफिनेटली P2 को चांस मिलेगा टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन, टू अपडेट द वैल्यूज, टू एग्जीक्यूट इट्स task. So this is what bounded waiting says. So these three are very important rules or protocols for the critical section problem. Very first is mutual exclusion, which says when any process is in the critical section, then no other process is allowed to enter the critical section. Second is the progress. Progress simply means progress कभी भी रुकनी नहीं चाहिए. अगर कोई एक process खुद नहीं जाना चाहता critical section के अंदर, तो वो बाकी सबको मना नहीं करेगा, रोकेगा नहीं due to any reason. It must allow other processes who are willing to enter the critical section, तो वो उनको easily जाने दे. That will definitely focus on the progress of the overall system. And last is the bounded waiting. So सभी processes की वेट पर एक बाउंड होगी, एक लिमिट होगी कि वो कितना वेट करेगा. ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोसेस बार बार, या सपोज 10 प्रोसेसेस हैं हमारे पास, तो 2 ही प्रोसेस बार बार क्रिटिकल सेक्शन में जा रहे हैं, बाकी 8 प्रोसेसेस को चांस नहीं मिल रहा. सो दिस इज the concept of critical section problem, and these are some of the important rules, or better to say the protocols related with critical section problem. Now there are so many different solutions which are provided for this critical section problem, and this is the general structure which I have just discussed with you people. Like if any process wants to enter the critical section, then first of all there will be an entry section. So entry section के अंदर कुछ कोड लिखा होगा, उस कोड के अकॉर्डिंग अगर वो प्रोसेस उस कोड को सेटिस्फाई करेगा, then it will be able to enter the critical section. When one process is in critical section, तो अगर उस टाइम पे अगर कोई दूसरा प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो नहीं जा पाएगा, बिकॉज क्रिटिकल सेक्शन के अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज मैंडेटरी. एंड व्हेन जो पहले प्रोसेस गया हुआ है, अगर वो अपना सारा टास्क कंप्लीट करके एग्जिट कर जाएगा, सो देयर इज आल्सो वन कोड विल बी देयर in the exit section, and after that there will be a remainder section. So I was just telling you that there are so many different solutions for critical section problem, and the very first solution is Peterson solution. तो भाई जितने भी solutions available हैं हमारे पास, उनमें जो सब में difference रहेगा वो main यहाँ पे रहेगा. एंट्री सेक्शन के अंदर हम क्या कोड लिखते हैं और एग्जिट सेक्शन के अंदर हम क्या कोड लिखते हैं. The general structure will remain same for all the solutions which are available for the critical section problem. तो अगर मैं पीटरसन सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कुछ और कोड लिखूंगा. उसके बाद एक और सॉल्यूशन है म्यूटेक्स की बात करेंगे, वहां पे यहाँ पे बस कोड चेंज हो जाएगा. देन वी हैव द कंसेप्ट ऑफ सीमाफोर्स. तो सीमाफोर्स के अंदर यहाँ पे एंट्री और एग्जिट सेक्शन का कोड कुछ और हो जाएगा. दिस इज द ओनली डिफरेंस. Rest the things will remain same. The structure of the critical section problem will remain same. Any process that wants to enter the critical section has to go through entry section, and once the process is done with all its tasks, then it has to go through the exit section, and there after that there is some remainder section which is not common or not influenced by the other processes. So I hope this is the thing is clear to